Hi, dear audience. How are you? Okay, dear audience. Welcome to our RANA SIR educational channel. Today, I will talk on a topic whose name is motion in a straight line. In this chapter, I will explain about Newton's law of motion. I will explain his theory in detail. So you concentrate on this point from starting to end to get good knowledge about this theory. Okay, student, one additional informations I am going to tell you and you follow it positively, properly and safely. First of all, you have to take one pen and notebook and then you have to sit at your location properly and positively. And then you have to write all information when I will write data on the blackboard, and also you also write those informations when I am speaking, and if you are feeling those are important, so you have to write on your notebook. Okay, student, simultaneously you also like this live video, you subscribe this educational channel, and also you share this live video with your colleagues, friends and students so that they can also understand, that is improve their knowledge on this topic. Here topic is Newton's law of motion. I will explain all these three laws in detail, and then you have to write also all information on your notebook for further revision. First of all, you understand and then you write all information on the notebook. Okay, student, so you stand, yeah, you present positively from starting to end for developing your good knowledge on this topic. Okay, student, so I am going to start it positively. Now, first of all, I will write chapter name, motion. Motion in a straight, straight, straight line. In this chapter, this is the chapter number 2, and I will explain all these informations in detail. Here I will explain topic name, that is Newton's laws of motion. Newton's law of motion. Newton's laws of motion. Each and every law I will explain in detail. First of all, I am going to first Newton's law. First, Newton's law. First, Newton's law of motion is very important. If any object which is moving from a point and that object has uniform velocity, so that object will move with uniform velocity if any external force will not apply on that object. In other words, we can also say that if any object which is living at rest, so that object will be at rest when any external force will not apply on that object. This is the first law of motion. Suppose that here I am going to say any object that is available OP, JECT, any object, yeah, a object which is available at point A. So that object will be at point A. If any
external force will not apply on that object. So after some time I will also look that object will be at the same point. So that is known as inertia of motion. If any object which is moving from the with a uniform velocity, so that object will move with a uniform velocity. It means that if any force will not apply, and that force can be external force. So external force will not apply on that object, so that object will move continuously with uniform velocity. So this is the first law of motion, and this first law of motion is also said as inertium. Also, first law of motion is also said as motion of inertia of motion. Inertia of motion. That first law is also said as inertia motion. Okay, so I hope that this information each and every student has understood clearly. If any student who have no knowledge and not understanding about this concept, so you write your information in comment section positively. I will look, and then I will positively reply the answer of your question in detail. Okay, student, if you are understanding very well, so you like this live video, and also you subscribe this educational channel, and also you share this live video with your colleagues, friends, and students, so that they can also improve, that is update and develop their knowledge on this topic. This is the first law of motion. So again I am going to say, if any object which is available at point A and no any external force will apply on that object, so after some time I will look that object will be at the same point at A. In other words, other information, I can also say that if any object which is moving with a uniform velocity, that object will move with uniform velocity if any external force will not apply on that object. So complete information is also known as inertia of motion. So this is the concept. If anyone will say what is the concept of inertia of motion, so you have to explain their first law, Newton's law of motion, first Newton's law. So you have to make a diagram like this, and you have to explain about object according to this way. If any object which is available at rest, so that object will be at rest when any external force will not apply on that object. Otherwise, in other words, we can say that if any object which is moving with a uniform velocity, so that object will move with uniform velocity if any external force will not apply, external force will not apply on that object. This these informations are also known as inertia of motion. Okay, student. So I hope that first Newton's law of motion you have clear idea. Now, if students who are reading in English medium, so those students can understand this information easily. But I am also going to translate this information in Hindi, so UP board student can also understand. Okay, so this is important topic, and this topic student has to know clearly. Okay, so first न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसका मीनिंग यह हुआ कि न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पर लेबल है, तो वह ऑब्जेक्ट या वह ऑब्जेक्ट को हिंदी में वस्तु कहते हैं, वह वस्तु जो होता है हमेशा उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर स्थिर रहेगा, रेस्ट में रहेगा, अगर कोई भी उस पर बाहरी फोर्स या बाहरी बल न लगाया जाए।
तो अगर हम किसी भी वस्तु को जो होता है किसी पॉइंट पर रख दिए हैं, किसी बिंदु पर रख दिया है, तो 1 महीना 2 महीना साल भर के बाद भी देखेंगे कि वह वस्तु जो होता है उसी पॉइंट पर रहेगा, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हम नहीं करते हैं। दूसरा इसका क्लू यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी, एक अचर वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो वो हमेशा उस अचर वेलोसिटी से वो मूव करेगा, अचर वेग से वो मूव करेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल कोई न लगाया जाए। इसलिए अगर बाह्य बल लगाएंगे तो वह वस्तु जो होता है रुक जाएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो वो कंटिन्यूसली जो होता है लगातार वो मूव करेगा। इसको जो होता है गति का इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसको गति का इनर्शिया कहते हैं। इस तरीके से आप फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप इजीली समझ गए होंगे। इफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज available at point A, that object will be at point A if any external force will not apply on that object. Otherwise, we can also say that if any object which is moving with a uniform velocity, so that object will move with a uniform velocity if any external force will not apply on that object. Okay, so this is the first Newton's law of motion I have explained here. So only in exam only ask what is the first law, Newton's law. What is the first Newton's law? You have to explain its concept, but there is no any numerical on this topic. So I will use next Newton's second law of motion, that is second Newton's law of motion, या second law. So second law I will also explain, second Newton's law I will also explain, that is second law I will also explain here. So second law is important because some question will be asked numerically on second law. So second law is direct. I will say second law is the product of mass of the object and also acceleration of that object is called second Newton's law of motion. So I will explain also here concept of second Newton's law. Second law. Second Newton's law of motion. Yes, law of motion. Second Newton's law. Second Newton's law. So here I will explain second Newton's law. Here I will say if any object which is available, so that object I will write here clearly. O B J E C T, and I will say that object is available at point A. Now here I will say this object will have mass M-A-S-S, mass. I will say it has mass M and its unit will be kg in MKS system. Now if this object will move from point A to B, so it will have acceleration A. So A is also called acceleration. ACCELERATION, acceleration. So object is available at point A and that object has mass M and its unit is kg. Now acceleration is denoted by A and its unit will be meter per second square. Now second law of motion, force is equal to M into A. In other words, I can say that the second Newton's law is the product of mass and acceleration, is called second Newton's law of motion. In other words, we can say that if any object which is available at a point, so I will say that object will bear a force F, and that force will be equal to the mass into acceleration. So here I have written F is equal to M into A. So F is equal to M into A. In other words, we can say
force is directly proportional to mass and force is also directly proportional to acceleration. I will say this is the equation number 1, and similarly I will say this is the equation number 2. From equation number 1 and equation number 2, that is equation number 1 and equation number 2, I will compose here, merge, then I will get F is directly proportional to M into A. F is directly proportional to mass of the object and F is directly proportional to acceleration of the object. Therefore, I will say F is directly proportional to M into A. In other words, I will say here F is equal to, I will take other constant, that is the constant K into M into A. Now here K will exist from minus infinity to plus infinity. Here I will say its domain will be minus infinity to plus infinity, but according to my information, that is formula will be easy. Therefore, I will take the value of K which is equal to 1. So, value of K is equal to 1, that will exist between minus infinity to plus infinity. Therefore, I will assume the value of K which is equal to 1. So, I will substitute here. So after substituting, I will get F is equal to M into A. This is the second law of motion, that is second Newton's law. This is the second Newton's law of motion. In other words, we can say that force is equal to M into A. M is the mass of the object and A is the acceleration of that object. In other words, we can say that Newton's second law of motion is the product of mass and acceleration is called Newton's second law of motion. That is, in other words, we can say that in symbol form, F is equal to M into A. So this is the mathematical definition of the Newton's second law of motion, that is F is equal to M into A, where M is the mass of the object and A is the acceleration of the object. Okay, second Newton's law of motion I will explain in Hindi also, because CBSE board या English medium student can easily understand, because second Newton's law of motion is the product of mass and acceleration, that is called Newton's second law of motion. It is represented by capital F and F is equal to M into A, where M is the mass of the object and A is the acceleration of the object. Now mass has unit kg and acceleration has unit meter per second square. Okay, these informations I have explained in the case of second Newton's law of motion. Now this information I will also explain in Hindi, so each and every student who are reading in Hindi medium, that is in UP board, those students can also understand easily. Okay, so second न्यूटन का दूसरा नियम, अगर हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो उस वस्तु का मास जो होता है m होता है, जिसका ये सारी यूनिट जो होते हैं m के यूनिट जो होता है kg होता है, और इस वस्तु पर जो फोर्स लगता है वो a होता है. हम कहते हैं फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, या मतलब द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान होता है, और फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है त्वरण के. जब दोनों समीकरणों को मर्ज करते हैं, मर्ज करने के बाद से हम पाते हैं कि F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, इम्प्लाई दैट लिखते हैं F इज इक्वल टू K M इनटू A होता है.
के जो होता है एक अचर कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू जो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है। हमारा कैलकुलेशन आसान है, इसलिए के का मान जो होता है हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह बराबर एम में होगा। ओके, और इसका अगर हम डायमेंशन लिखेंगे और इसका यूनिट लिखेंगे तो लिखकर भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका यूनिट लिखेंगे तो मास का यूनिट जो होता है केजी होता है और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ए एफ का यूनिट जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चूँकि यह कंसेप्ट जो होता है न्यूटन ने दिया था, तो इसकी जगह पर हमने एन लिखेंगे, हम एन लिखेंगे। तो एन का वैल्यू जो होता है केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको एसआई यूनिट के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, सो दीज आर द इंफॉर्मेशन इफ वी वांट टू राइट unit of this force, so we can write unit of mass is kg and unit of acceleration is meter per second square, and it is also represented with here because n is coming from Newton, because Newton n is started from n, so I will write that n. So SI unit is n and the value of n which is equal to kg meter per second square. Okay, if we need to write dimension of the force, so we have to know the value of n and the value of n which is equal to kg into meter per second square. These are the information, and we have to know the information in detail for writing the dimension of other quantities. Sorry, other derived quantities. Okay, so according to this way I can define the second Newton's law of motion. So this is very important because some numericals can be asked on second Newton's law of motion. Okay, now similarly I am going to explain that if any object which is available at point A and I will apply force F on that object, so that object will have mass M and it will have acceleration A. So that force is directly proportional to mass of the object and directly proportional to acceleration of the object, and these two equations I will merge. After merging I will write F directly proportional to F into A, where in other words we can say that F is equal to K into M into A, where K is the constant value and it will have a domain from minus infinity to plus infinity, and it's for the simple calculation I can take the value of K which is equal to 1. After putting the value of K 1, so I will get F is equal to MA. Now I have to write its unit. So mass of the object is calculated in kilogram and acceleration will have a mks unit meter per second square. So its unit will be kg meter per second square, and it is also written with m because this formula which is given by Newton, and Newton is started with m. So I will put there m, the value of m which is equal to this one, and this value will require when I will write the dimension of the force at any value, any constant value which is available in the formula, but there will come force, so I will put the value of n in the place of n this much. Okay, for solving. So those information we should note clearly. Okay, so first law of motion I have already explained in detail, and second law of motion I have already explained in detail. Okay, if you have any doubt or confusion, so write your comment issue in the comment section positively, and I will see your comment, and after looking your comment positively I will give the solution of your comment clearly. Okay, so you will satisfied with that answer. Okay, now here I am also explaining the information of first Newton's law of motion and second Newton's law of motion. Similarly I will also explain third Newton's law of motion like this in detail. Okay student, so this information I will erase, and after erasing I will explain
the third law of motion in detail. Okay, Newton's law of motion. So in second Newton's law of motion, again I am going to translate in Hindi, so each and every student who are reading in Hindi medium, those students can also understand this concept in detail. Okay, and simultaneously, if you are understanding very well, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also improve their knowledge on this topic. And also you subscribe this educational channel more and more, because each and every topic I will explain in detail. Each and every topic of the physics I will explain in detail. This is the chapter number 2, and I have taken from the class 11th physics. Okay, student, so clearly you understand it. Okay, 9th class student who are reading in English medium, those students can also understand, because some chapters who are also available in the class 11th, and some chapters are other than class 9. So each information when I will explain which are available in the class 9, so those students can also take advantage, because this is free online coaching classes, and then you take its advantage, because I have already uploaded class 12th mathematics, class 12th physics, and also class 10th mathematics and physics and chemistry. I have all already prepared and uploaded, so you can read from my YouTube channel, that is RANA SIR UP KUSHINAGAR. You go in my playlist section, and from there you can read each subject chapter wise. Okay, if you will have any doubts, so you ask your doubt in the comment section. Positively I will see, and then I will reply the solution of your question in detail. Okay, student, so you follow it positively. Now second Newton's law of motion I am going to explain in Hindi also, so each and every student can understand. Here यहाँ पर मैं एक पॉइंट ए लिए हैं, और एक पॉइंट को हम बिंदु कहते हैं। बिंदु ए पर जो होता है एक वस्तु रखते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान जो होता है यम है, और उसको जो होता है हम कैलकुलेट करते हैं केजी में, दैट इज एम के एस यूनिट केजी होता है। और उसके बाद से उस पर हम एक फोर्स एफ अप्लाई किया है। हम देख रहे हैं एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, जो यहाँ पर हमने समीकरण एक बनाया है। इसी तरीके से एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन होता है। इसी तरीके से समीकरण 2 बनाया है। समीकरण 1 और 2 को जब मर्ज करेंगे तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान और एक्सीलरेशन होगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो एक अचर कांस्टेंट के आएगा, और के का वैल्यू जो होता है माइनस इन्फिनिटी के प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है। हमारा फार्मूला जो होता है आसान होता है, इसलिए के का वैल्यू हमने 1 लिया है। 1 लेने के बाद से इसको सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाई करने के बाद से इसका यूनिट भी लिखे। यूनिट का मतलब इसका मात्रक लिखे हैं कि द्रव्यमान को हमेशा केजी में तोला जाता है, और जो एक्सीलरेशन होता है उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कैपिटल एन से लिखते हैं। यह भी एक ऐसा यूनिट होता है, क्योंकि यह फार्मूला जो मिला है यह न्यूटन ने दिया था, इसलिए न्यूटन ने एन से स्टार्ट होता है, इसलिए कैपिटल एन को वहाँ पर रखा जाता है, ताकि वह हमेशा फेमस रहे। और फेमस के लिए वहाँ पर उनका सिंबल, नेम के सिंबल को यूज किया गया है। ओके, तो इस तरीके से हम सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम कहेंगे कि एफ इज इक्वल टू एम में। सपोज किए कि अगर प्रॉपर इसका डिफिनीशन आपको नहीं मालूम है, तो डायरेक्ट आप कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो आपको बताना है कि एफ बराबर एम में। सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन इज नोन एज फोर्स, दैट इज द सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसका यूनिट पूछा जाएगा तो केजी सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, ये सारे इंफॉर्मेशन को आपको सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एक्सप्लेन करना। ओके स्टूडेंट, सो पॉजिटिवली जो होता है ये सारे इंफॉर्मेशन हैं, सारे इंफॉर्मेशन को हम इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से हम थर्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके,
Third, Newton's law of motion. NHIMB. Third, Newton's law of motion. इसमें जो हम एक्सप्लेन करेंगे कि कोई एक सरफेस है, वो सरफेस को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, एक ग्राउंड सरफेस है। सपोज ये कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ओ बी जे ई सी, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। सपोज करें कि एक पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट रखा गया, ये मूव किया हॉरिजॉन्टली, वो मूव किया, तो मूव करने के बाद से वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सपोज कि बी पॉइंट को दो सर्विस किया, वो बी जे ई सी ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे कि इस पर जो फोर्स लगा है, इस पर जो फोर्स लगा है, जो फोर्स लगाया है, ए से बी तक मूव किया है, ए से बी तक मूव किया है, फोर्स ए, फोर्स एट पॉइंट ए मूव एट पॉइंट बी। सो हम इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से अगर हम फोर्स, इस फोर्स पर इसको और क्लियर कर दें ताकि हम उसका भी रिप्रेजेंटेशन क्लियर कर सकें। ओ बी जे ई सी ऑब्जेक्ट, तो इसका डायरेक्शन जो होता है इधर हो रहा है, लेकिन जब ये पॉइंट बी हमने यहाँ पर ये जूम किया, ये पॉइंट बी जो होता है यहाँ पे जूम किया, तो इधर से फोर्स जो होता है बी से, यह फोर्स जो होता है बी से ये लगेगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे बी ए। तो न्यूटन थर्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर कहता है कि फोर्स एफ ए बी विच इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, because this is also vector quantity and this is also vector quantity. Force AB which is equal to minus force BA, फोर्स BA, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, I will write like this. In other words, we can say that Newton's second law of motion is also known as action is opposite, action is equal and opposite, action is equal and opposite, action is equal and opposite in direction, because if any object that is available at point A, if I will apply a force on that object and that object is moving, and after moving that object has available as at point B, so that force I will say FAB, means that object is moving from point A to B, so that is denoted by FAB. Again, I will say if any object, if that object is available at point B, and again I will apply a force, so that object will move from B to A, so that will have same magnitude, but its direction will be opposite. So this minus sign is saying direction is opposite. Direction is opposite. Direction is opposite. Action is equal and opposite in reaction. Action is equal to opposite in reaction.
third law of motion. Third law of motion. I will say third Newton's law of motion. I will say action is equal to opposite in reaction. This negative sign is saying direction. Direction is opposite. Both force will have same magnitude, but its direction will be in opposite. Direction will be in opposite because this object is moving from point A to B, and again that object is moving from B to A. Because if in first case I will take positive direction is along left to right, but when I will move from right to left, so its direction will be changed, so it will have minus sign. So magnitude wise will be same, but direction wise will be opposite. Okay, so action is equal and opposite in reaction. So that is called third Newton's law of motion. So each and every student has to remember in clear. So those students who are reading in English medium, so third Newton's third law of motion are those students are knowing clearly. But I am also going to explain this concept in Hindi. So student who are reading in Hindi medium, that is in UP board, so student can also understand easily. हमने सपोज किया, हमने माना एक वस्तु है, वो वस्तु जो होता है बिंदु ए पर जो होता है अवेलेबल है। अगर उस पर फोर्स हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद से वो उस फोर्स के द्वारा बिंदु बी पर पहुंच जाता है, तो उस पर हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे एफ टू बी। क्योंकि यह एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा जिसको हम सब्सिडाइज करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कीजिए कि सेकेंड केस में अगर हम फोर्स बी पर अप्लाई करते हैं और बी से मूव कराकर हम ए पाते हैं, तो इसका डायरेक्शन जो होता है पहले वाले की डायरेक्शन के विपरीत हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्योंकि ए से बी पर गया, बी से ए आया, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। उस डायरेक्शन को अपोजिट के लिए यहाँ पर सिंबल हमने माइनस लिखा है, इस ऊपर यहाँ पर हम एरो दिया है, इसका मतलब ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए दोनों फोर्स जो होता है डायरेक्शन में तो है, यह फोर्स ए से बी जा रहा है, यहाँ फोर्स बी से ए जा रहा है, ए फोर्स ए से बी, ए बी से ए आ रहा है। इसलिए ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ को माइनस साइन रिप्रेजेंट किया गया है। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि दोनों फोर्स के डायरेक्शन दिशाओं को रिप्रेजेंट किया दर्शाता है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम एक्सप्लेन किए। ओके स्टूडेंट, अगर कोई भी डाउट है तो उस डाउट को या क्वेरी है या कोई भी इसके करस्पॉन्डिंग इशू है, उस इशू या क्वेरी को जो होता है पॉजिटिवली जो होता है कमेंट सेक्शन में लिखें और शेयर करें। पॉजिटिवली जो होता है उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और उसका आंसर को रिप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर यह पॉइंट जो होता है आपको समझ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ऑल्सो इस वीडियो को शेयर करें अपने कलीग के साथ, स्टूडेंट के साथ और विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट को अपडेट और डेवलप हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो की जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। वहाँ पर बेल आइकन भी है, उसको प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और यहाँ पर जो है इस वीडियो पर जो है स्टार्टिंग से अंत तक कंसंट्रेट रहें। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। उसका यूटिलाइजेशन कैसे, उस फार्मूले का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं उसको उसका यूटिलाइजेशन भी आपको यहाँ पर समझाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो पॉजिटिवली आई होप दैट you have understood third Newton's law of motion clearly. Now I will erase this one and then I will use the second Newton's law of motion, because numericals will be asked on this law more. And first and second Newton's law of motion, that is only used in definition, and some way I can say that some MCQ question can be asked. The MCQ questions means multiple choice question can be asked.
Okay, if you will know its definition, so you can also give its answer. If the two question can be asked with you. Okay, student. Now, first further, I will erase this information, and after erasing this information, then I will solve some numericals. Okay, students, so you concentrate on this topic. Now here I am going to tell question. If any object which is available at point A, here I will say this is the point A, and on that point one object which is equal OB, J is CT object, and it has mass. Mass is denoted by M, and it has mass 5 kg, and its unit is written in MPS system. Okay, now here I will apply a force here. I will apply a force here. So that object is available on the ground surface at any surface, and with this force that object is moving 10 seconds. That object is moving 10 seconds. After moving, that object is written at point B. So I will draw a line, and that object is moving from point A to B in 15 seconds. I will write here 15 seconds. That object is moving. So we have to find. We have to find force. What will be the value of force? What will be the value of force we have to find? Now we are knowing. Here I will write solution. Solution will be as we know that F is equal to M into A. Force is written with formula M into A. That is very important to do it. But I will use equations of motion. So equations of motion, we know that first equations of motion U is equal to U plus AT when any object which is not moving. So I will say that object will have initial velocity 0. So initial velocity is written with U. So I will put the value of initial velocity here 0 now, and value of acceleration is also given here now. That object is moving 10 seconds. So I will put here 10. Now after moving, final velocity is also available. That final velocity I will write here 2 meter per second. 2 meter per second. So value of initial velocity I will write here 2 meter. So 2 which is equal to 15 into A. So the value of A I will write here 2 divided by 15. So I will divide this, I will calculate this value. So the value of acceleration is available here 2 divided by 15 meter per second. Now we have to get the value of force. The value of force is written here M into A. So the mass of that object is available 5 kg. So I will put here 5 kg into the value of A. The value of A is 2 divided by 15. So I will put here 2 divided by 15. Now further I will simplify. After simplify I will get this value 5 is 5, 5, 3 is 15. So I will also divide 3 1 is 3, and here I will say point 3 6 is 18. Again 6 3 is 18. So I can put 7. So value of here I can write here 0.667 Newton, and its other unit will be kg meter per second square. This is the final answer of my question. So here I have used two concepts. First concept is the equations of motion. There are three
equations of motions are available. First is V is equal to U plus AT, and where I will say V is the final velocity and U is the initial velocity, A is the acceleration of the object, and T is the time when object is moving from point A to point B. Okay, now second equation of motion I will also explain here. S is equal to ut plus half at square, and third equation of motion I will also explain. T square is equal to u square plus 2as. So here first equation of motion I have used, and then second Newton's law of motion I have also used. F is equal to ma. With the help of these two formula I have got the value of a, that is acceleration, and after getting the value of acceleration, mass of the object is also given here 5 kg, that is kilogram, and acceleration is also represented here 2 divided by 50. After simplify I have got 0.667 Newton, and Newton is also written as kg per second square. This is the final answer of my question. Okay student, if you are getting any doubt, so you write your doubt, that is the query, positively in the comment section, and then reply the answer of your question in detail. If you are understanding very well, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also update and develop their knowledge on this topic. Okay students, simultaneously you also subscribe more and more educational channel, that is RANA SIR UP KUSHINAGAR, and when you will subscribe this educational channel, each and every topic of the physics which are available in the class 11th, and also which are available in the class 9th, those topics I will cover in detail, so you can also imagine to solve any questions which are available in the class 11th. Okay student, here and also class 9, because here I will explain each concept of the physics. Now I know mathematics is just calculation of the physics, means mathematics is derived from the physics, so we have to explain all concepts which are available, differentiation, integration, which are available in the physics. Those information I will explain, so you can also understand using mathematics. Okay students, so this information I have already explained in English. So CBSE board student, and also student who are reading in English medium, those students can understand easily. Now I am going to translate this information in Hindi, so student who are reading in Hindi medium, that is in UP board, those student can also understand such questions, solution of such question. ना यहाँ पर हम कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान जो होता है 5 किलोग्राम लिया गया है। इस वस्तु को जो होता है फोर्स अप्लाई किया जाता है, बल अप्लाई किया जाता है इस तरीके से कि यह ऑब्जेक्ट, यह वस्तु मूव करके बिंदु बी पर चला जाता है। तो उस केस में जो होता है हमें फोर्स का मान ज्ञात करना है। तो जब मूव करता है तो उस वस्तु का जो होता है त्वरण होगा, उस त्वरण को कैलकुलेट करना है, और जब बिंदु पर पहुंच जाता है, लेकिन ए से बी बिंदु पर जाने में टाइम कितना लगता है, 15 सेकेंड होता है। तो हम गति का वाला समीकरण जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी होता है। v जो होता है अंतिम वेग होता है, u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है, ए जो होता है त्वरण होता है, टी जो होता है टाइम होता है। तो हम जानते हैं जब वस्तु मूव नहीं करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज गति के फर्स्ट समीकरण में जो हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे। अंतिम वेग जो होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 2 मीटर पर सेकेंड होता है, तो उसका वैल्यू रखकर सिंप्लीफाई करते हैं तो त्वरण का मान कितना आता है, 2/15 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये त्वरण सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। त्वरण का यूनिट जो होता है 2 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हम जानते हैं न्यूटन का सेकेंड नियम ये होता है, F बराबर या उस वस्तु का मास जो होता है 5 kg दिया गया, तो 5 रख दिए। त्वरण का वैल्यू होता है 2/15 आया है, 2/15 जब इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो फोर्स का मान जो होता है 0.667 मीन्स 0.6666 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, इसलिए हम उसको राउंड
राउंड करके हम 7 यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर टर्मिनेट कर दिए, इसको राउंड कर दिए फिगर को, और उसका ये SI यूनिट जो होता है हमने न्यूटन लिखा है। ये SI यूनिट न्यूटन है। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसका वैल्यू जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भी जो होता है SI यूनिट ही होता है, क्योंकि इसकी जगह पर एफ रखा जाता है, क्योंकि यह फार्मूला किसने दिया था, न्यूटन दिया था। न्यूटन का नाम जो होता है न्यूटन से स्टार्ट होता है, इसलिए यह सिंबल यहाँ पर रखा गया न्यूटन के नाम को फेमस करने के लिए। ओके, तो यह बराबर 0.667 न्यूटन होता है। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। ओके स्टूडेंट, अगर इस वीडियो में जो भी पॉइंट आपको डाउट लगा हो तो उसको आप पेंट करें पॉजिटिवली, और उसके वो क्वेरी जो होता है पॉजिटिवली हम ऑब्जर्व करेंगे, और उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिवली। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने कलीग के साथ, विद्यार्थियों के साथ और फ्रेंडों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज जो होता है इस पॉइंट को अपडेट और डेवलप हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है राणा सर यूपी कुशीनगर, ताकि फिजिक्स क्लास 11 के फिजिक्स में जो जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को एक डिफिनीशन दैट इज कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, और हर कॉन्सेप्ट को जो होता है न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, ताकि उसका एप्लीकेशन आपके सामने रहेगा। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट भी और ब्यूल होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, और वहाँ पर बेल बटन भी है, उस बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और उस वीडियो के नोटिफिकेशन से आप उस वीडियो को सबसे पहले नए आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। ओके, यहाँ पर एडिशनल वन इंफॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो भी टॉपिक आपको छूट गया है, हर टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर लाइव वीडियो सेक्शन में जाकर हर टॉपिक को प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज जो होता है क्लास वाइज और चैप्टर वाइज आपके सारे डाटा अवेलेबल है मिल जाएंगे, और आप उसको प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन को आप नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक पर फॉर फर्दर रिवीजन। ओके, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, राणा सर। Thank you for watching this live video.